Last video में the special trip that I was talking about was Kedarnath. Yes. So our journey begins from Borivali to Delhi. And Delhi मैंने first time visit किया था. It was my very first time in Delhi. Delhi was great. I mean not that exciting. हमने उतना ज़्यादा कुछ exciting चीज़ें नहीं की. But a very special thing that happened. But I'm not allowed to share that because it is not related to me. It is related to one of the person on the trip. It was great. दिल्ली में like we were traveling, like हम रात को वो इंडिया गेट के आसपास की जो सड़कें होती हैं काफ़ी शांत, हम रात के 12-1 बज रहे थे ना, हम अकेले हम तीनों वॉक कर रहे, इतना शांति था रोड पे, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट सन्नाटा. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. रात को दिन रात को लाइक दिल्ली में पूरा घूमना एंड ऑल दैट. एंड देन हम रात को इंडिया गेट भी गए थे. इट वॉज ऑल्सो अ गुड एक्सपीरियंस. एंड नेक्स्ट डे हमने एक मॉल विज़िट किया एंड मस्ती कर रहे थे, इधर मजाक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे. एंड बाय द वे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग और हैविंग अ लुक एट द मस्ती दैट वी डिड, यू कैन वॉच वरुण्स व्लॉग्स. मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, तो यू गैस कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. सो ओवरऑल दिल्ली वॉज ग्रेट. एंड द नेक्स्ट डे लाइक वी वर देयर इन दिल्ली फॉर 1.5 day. 25th को शाम को आर ट्रिप स्टार्टेड, द एक्चुअल केदारनाथ वाला ट्रिप स्टार्टेड बस से. एंड सुबह सुबह वी रीच हरिद्वार बस से. एवरी सिंगल प्लेस दैट आई विजिटेड ऑन दिस ट्रिप was visiting, like I visited them for the very first time. Okay, so it was a good experience of Haridwar as well. One thing that I would like to tell is कि we had a lot of obstacles in our way to Kedarnath. Like not just all 3 of us, but like the entire group of people with whom we were traveling on this trip. हमारी बस लेट हुई थी, हमें कुछ 8 से 9 घंटा रुकाया गया था इन हरिद्वार, एंड हमें लेट हुआ था वहाँ पे. एंड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग. एंड वाइल ट्रैवलिंग आई वुड से कि आई वॉज थोड़ा बहुत ऐसा बोलते ना कि आई वॉज नॉट कम्प्लीटली ऐसा वरीड एंड ऑल दैट, बट देयर वाज समथिंग दैट आई वॉज वरीड और एंग्शियस अबाउट और लाइक नर्वस अबाउट. देयर वाज समथिंग, you know, like the thing that you keep thinking about, and you know, like something that you're expecting, your inner being is expecting. Maybe you're not showing that much, but it is there inside. You're thinking about it, you want that to happen, like you are asking something from God. So that was always there. Somehow we got done with Haridwar wala thing, and then we started our main actual Sonprayag wala journey. So we started our actual trek around 7 to 8 a.m. उस morning में. The trek was amazing. Personally, I was not having any issues at all. I was completely fine. बस ऊपर चढ़ते टाइम like just like when 1 to 2 kilometers were left, that time I was थोड़ा बहुत ऐसा कह रहे यार like अब कभी आएगा वो सारी चीज़ें हो रही थी. But I did not face any problem or anything like that while traveling, while going there. And the moment we saw the temple light up, like proper lighting हो रखी है. हम रात को कुछ 10 बजे 11 बजे के आसपास पहुँचे थे. And the moment we saw the temple, like I saw the temple, every single, like even if I had any pain, it all just wiped off, you know, like सब हट गया था. I was like ख़त्म, you know, मुझे बस दिख गया जो मेरा डेस्टिनेशन था, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ. एंड इट्स डन. आई मीन मिल गया मुझे जो चाहिए था, वो मिल गया. इट्स लाइक दैट. वो चीज़ थी. मैं जैसे ही पहुँचा, विदाउट इवन गोइंग इनटू द होटल, आई जस्ट कॉल्ड ममा एंड आई मेड अ वीडियो कॉल एंड आई शोड हर कि यू नो I've reached and ये है एंड ऑल, टेम्पल एंड ऑल, कि दर्शन हो रहा है, लाइटें हो रखा है, सब चीज़ें. वो चीज़ थी. Now यहाँ पे the main problem that we faced, like we were told that we will be leaving at around 11 a.m. Like we have to check out of the hotel at around 11 to 12 a.m. And we did not have that much time, because everybody in our group, every single person on the trip with whom we were traveling, had their darshan done. Okay, and we were the last 3 people who were left for the darshan, because we woke up very late, like around 6 to 7 a.m. Now when we saw the queue for the like darshan के लिए, it was very like far, and हम अगर लाइन में लगते ना तो easily it would have taken us 6 to 7 hours to reach the temple and darshan करने के लिए, and we did not have that much time. So we did what we usually do. We sneaked into the temple, like literally exit gate से we sneaked into the temple, and it was a big struggle. उसकी stories
काफ़ी काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कैसे कैसे करके हमने एग्जिट गेट से एंटर किया and we got into it. Luckily, we got into the temple and we had our darshan done. Darshan mila. And the moment I got into the temple personally, I literally felt different. Like, it felt like everything has ended. Like, kuch bhi nahi hai outside. It's just here, and this place is the only place that is existing in this world. And I'm here. That's it. That's all that I was going on in my mind. You know, I was consistently chanting the Panchakshari mantra, which was Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I also chanted Hanuman Chalisa 3 to 4 times. And it is, I was looking at the architecture of the temple under se, it's like 1200 years old temple, and the way it is built, and the murti, the way it has been maintained and all, sabhi cheezein. I was just experiencing, trying to be in the moment, just trying to observe and just absorb all those energies and all. And so there is a place like you walk and you तुम चक्र लेते एक ऐसे घूम के जाते हो, तुम मेन गर्भगृह के पास जाते हुए. The moment I entered गर्भगृह वाला एरिया ना, I literally had tears in my eyes. And one of the best things that happened was that we got Mahadev's darshan on Monday, which is his day only. And the date was also very special to me, 27th. So like the date and the day both were special for me. So as soon as I entered that area of Garbhagriha, I literally had tears in my eyes. And there was a Pandit who was standing and he was like kind of helping people to move ahead and all. So he saw me and उन्होंने मुझे देखा and he just kept looking at me. Like कम से कम he literally stared at me for like 5 to 10 seconds literally. मैंने उनको एक बार देखा, मैंने अपने आँखें नीचे कर दी because I had literally like tears and all. So I noticed him just literally staring at me for like 5 to 10 seconds consistently. And तब मैं आगे बढ़ गया. And luckily I got a chance to stand there for like 4 to 5 minutes just praying. And I'm telling you, like I did not feel like anything. Like there is nothing that is existing. It was just me with him asking for things that was going on in my life and asking for his blessings and just like normal things that we do when we are there in front of God. Overall, it was an amazing experience. I cannot imagine कि इतने स्ट्रगल के बाद भी और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हमें बाबा ने खुद के दर्शन दिए एंड वो सक्सेसफुल रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा. एंड मंदिर से बाहर आने के बाद बाजू में एक छोटा सा मंदिर है भैरवनाथ का, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है आपको, वहाँ पे गए थे. एंड ऑल्सो इट इज़ माई फर्स्ट एवर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो मैंने किया. 12 ज्योतिर्लिंगों में ये मेरा सबसे पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रखा. सो आई फील रियली लकी एंड ग्रेटफुल कि केदारनाथ मेरा पहला ज्योतिर्लिंग का दर्शन है. स्नेकिंग का हम ये भी लेके गए थे, स्नेकिंग का पोस्टर लेके गए थे. स्नेकिंग के साथ हमने फ़ोटोज़ निकाली, बाबा के साथ फ़ोटो निकाली, काफ़ी सारी मस्ती की, ये सारी चीज़ें की हैं. एंड हमारे पास टाइम नहीं था. आई लिटरली डिड नॉट हैव दैट मच टाइम. हमें चेकआउट करना था एंड देन वी हैड टू ट्रेक बैक डाउन एंड ये सभी चीज़ें थी. अदरवाइज आई पर्सनली वुड हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट मोर देन व्हाट आई डिड. आई वुड हैव लिटरली गॉन टू अदर माउंटेन्स जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट I could not do that because I had other people who wanted to trek down again. So next time I will definitely do whenever I will go. And then we started our trek back नीचे. We took a lot of shortcuts while coming back. A lot of shortcuts. Like literally इतना लंबे रास्तों को हम कट करके shortcuts लेके आ रहे थे. And through those shortcuts we explored a lot of new places. कि हाँ यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे. तो a lot of interesting things that we did while coming back नीचे. So overall, if I would like to summarize this, there is no summary or anything like that. It was just despite all this obstacles we managed to get the darshan and it was just his blessings and उनको बुलावा था. बोलते ना कि जब बुलाते हैं तो आपको दर्शन मिल ही जाता है. तो it was like that. While coming back, I had a lot more energy, a lot more as a desire to just go back and start working and like वो बोलते हैं ना कि कहीं पे आप जाते हो वहाँ से ज़्यादा टाइम आप कुछ और होते हो, ज़्यादा टाइम कुछ और होते हो. इट वॉज लाइक दैट. वाइल गोइंग टू दैट प्लेस आई वॉज समथिंग डिफरेंट एंड वाइल कमिंग बैक आई वॉज समथिंग डिफरेंट एंड नाउ आई एम लिविंग विद दैट एनर्जी. वाइल कमिंग बैक जो मेरे पास थी, इट वॉज फिल्ड विथ लाइक दैट मोटिवेशन कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव इट, I will make everything better, it's my responsibility and all that. It was like that.
I literally had that positive feeling कि हाँ ठीक है चल, जो भी है, जो भी problems है, जो भी like whatever you're going through, whatever things that are happening in your life right now, everything will improve, everything will get better, and I am the one who is going to do it. I just have to keep working on those things and stay focused. So that's what I came back with from Kedarnath. Just hope I can get a chance to go there as early as possible. Har Har Mahadev. चलो बैग पकड़ पा दिया क्या